हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। हाउ आर यू डूइंग? कैसा चल रहा है बेटर ब्रेकफास्ट? लेट अस नो इन द कमेंट्स। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। Yes, yes, very good to see you as well. How are you doing? Yes, so tell us what breakfast did you prepare today? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज आपने कौन सा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। थैंक यू सो मच। Voice is breaking. Backend team, just check if the audio visual is proper. Yes, awesome. I also need help removing the We Will Start Sharp banner, please. Thank you. Okay, let's read your comments. Paneer dosa, sprouts, upma lal chana dosa, fruits kanda poha, chila, dal roti, fruits oats porridge, papaya dry fruits milk makhana. Okay. Millets, sambar chutney, something sounded very interesting. I missed that comment. Okay. Millet upma, amazing. Okay, I found it. Millet idli, sambar, and coconut chutney. That is one of my favorite breakfasts. Boiled chana salad. Okay, salad, dosa, watermelon. Okay, moong dal paratha. Wow, sounds fun. Are you having fun? Are you enjoying the better breakfast? Yeah? Are we learning new things every day? Type Y in the chat box if you're learning something new every day. ऐसा थोड़ा थोड़ा पता था, we knew a little bit, but now we know like clarity से पता चल रहा है ना. Yes, yes, yes. है ना. And over the course of this month we are going to learn so much stuff. इतना कुछ सीखेंगे, इतना कुछ जानेंगे. You will be like wow, this is, and we learn something which we use on a daily basis, right? हम रोज खाना खाते हैं मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 बार, और सोचिए उस खाने के बारे में हमें नॉलेज नहीं है. सो ये मंथ हम लोग उस खाने के बारे में जो हम अपने दिन का कितना समय व्यतीत करते हैं ना, सो मच टाइम वी डेडिकेट टू फूड. फर्स्ट वी हैव टू थिंक व्हाट वी आर गोइंग टू ईट, then we have to make what we are eating, then we eat, then we think what are we going to eat next, then we start preparing for it. So much time we give to food, and yet we don't know anything about it. So this is why we have dedicated this whole month of March to talk about food, because it plays a very very important role in our lives, right? And we have a very well renowned expert. I'm sure you've met him. Some of us okay, tell us how many days have you attended the session? Kitne, is this your third day? Monday, Tuesday, Wednesday, or is it second day, first day? Let us know how many days have you attended. Let's see. All three? Wow, very nice. Perfect. Perfect. Very nice. Full attendance. But no worries. If you've not attended the past sessions, completely okay. We are doing a completely new topic today. आज बिल्कुल नया topic है. So every day that you join is going to be a new topic. Up, you learn about it, and then you can always request for the recordings. But I prefer, and it is my personal opinion, that you should attend it live, like how we do our yoga live. That's how we should do it. My name is Yamini Agarwal. I am the community manager at Habild. Perfect. I can see all of us have attended for 100% attendance for most days, but it never mind if you're just here today. You learn a lot about it today. Yeah. So if agar by chance if somebody is not following the breakfast schedule, hi, you can always start it fresh, right? कल से हमें start करना है. The team will provide you with everything that you require, and you can जब जागो तब सवेरा, right? On this note, let's also welcome our expert. Hello, sir. Hi, Amini. How are you? I'm good. How are you? I'm awesome. Yeah, thank you so much. How was your day?
Perfect. Very good. How was Perfect. your day? काफी हेक्टिक, काफी फन. आई हैड क्वाइट अ फ्यू सेशंस टुडे. इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है, तो द होल वीक इज जैम पैक्ड. But this is something which I really enjoy, and I'm loving the energy in this community. So, hi everyone, how are we doing? All good. Very good. I We were think we are just all set to discussing start about- for the day. Yes, we can start with We today's can topic. start. Okay, okay, awesome. So, just like every other day, good evening, namaste, salam, adab, jai Julilal, jai Jinendra, jai Shri Krishna. What's up? How are we doing? मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है. जो पहली बार मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं क्विक इंट्रोडक्शन. मैं डॉक्टर हूं, बट मैं मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करता. मैं आपको घर के खाने से ठीक करने का गोल रखता हूं. दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई प्रैक्टिस, दिस इज व्हाट आई टीच. एंड हम अगले 20 दिनों तक हर शाम को मिलने वाले हैं. एवरी 5 days a week इस टाइम पे मिलेंगे. हम एक नया टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में सिंपल और सरल भाषा में बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट 2 days we spoke about balanced diet, and उसके बाद हमने बात की मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में. तो हम शुरू करते हैं. अगर आप सब लोग आज के सेशन के लिए रेडी हो तो टाइप करो रेडी, एंड शुरू करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करना. और अपने सारे सवाल सोच के रखना, बिकॉज ये जैसे ही 10-15 मिनट का मेरा टॉक खत्म होगा, वी विल गो थ्रू द Q&A. ठीक है? आर यू ऑल रेडी? Are you all ready? Can I see some yeses? Okay, yes. Let's go for this. Okay, so जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि हम सबको हेल्दी रहने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, वी नीड 6 components: कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. ये 6 चीजें हमारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब में होना चाहिए. उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट. अगर आपके मेजॉरिटी ऑफ द मील्स हैव कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, और आप अच्छे से पानी पी रहे हो, तो आपका डाइट है बैलेंस. अगर आप बैलेंस डाइट सही मात्रा में रेगुलरली खाओगे, तो आपके बहुत सारे डिजीजेस मैनेज हो सकते हैं और आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन नहीं आ सकते हैं. सो दिस इज व्हाई बैलेंस डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे: मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो मतलब जो चीजें हमें बड़ी मात्रा में चाहिए इन कंपैरिजन टू द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो जब भी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या विटामिन या मिनरल्स की बात करते हैं, तो हम मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में उनकी बात करते हैं. कार्ब्स और प्रोटीन्स और फैट्स की जब बात करते हैं, उनको हम ग्राम्स में मेजर करते हैं, तो इसलिए उनको मैक्रो बुलाते हैं: कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. बट आज का टॉपिक है माइक्रो. माइक्रो का मतलब है छोटा छोटा. छोटी मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटीज में, वी नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर योर 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. छोटी मात्रा में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए, इट डजंट मीन दे आर नॉट इंपॉर्टेंट. इन फैक्ट दे आर वाइटल. वाइटल का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए अत्यंत जरूरी. अगर इनकी डेफिशिएंसी हुई, इफ यू आर नॉट meeting the daily requirements of certain vitamins and minerals, it can lead to life threatening conditions. तो आप मुझे बताओ, पैंडेमिक में कौन कौन से विटामिन्स एंड मिनरल्स, कौन सा विटामिन बिकेम वेरी पॉपुलर इन पैंडेमिक? 2 विटामिन थे, बताइए. देयर वर 2 विटामिन्स who became विटामिन D3, यस, और विटामिन सी, है ना? तो तो अभी ये 10-15 मिनट में हमारा जो टॉक होगा, उसमें मैं आई टेल यू व्हाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and how to get them on a regular basis so that we don't suffer from deficiency. And also if we suffer from any deficiency, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, we'll talk about that too. तो सबसे पहले let's talk about why vitamins and minerals are vital. As I said, उनका हमारे लाइफ के सारे प्रोसेसेस को अच्छे से चलाने के लिए they are mandatory, नॉट रिक्वेस्ट, इट्स अ डिमांड. रिमेंबर फ्रॉम यस्टरडे सेशन, हमारी बॉडी रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, उसका डिमांड है कि हमें ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑन अ डेली बेसिस इन राइट अमाउंट वी नीड. इफ यू डोंट, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. अभी आपको जितने भी विटामिन और मिनरल्स आपके दिमाग में याद आ रहे हैं, सब टाइप करो. आपके दिमाग में जो भी विटामिन और मिनरल्स आ रहे हैं, कमेंट्स में मुझे बताओ. जब तक तुम बता रहे हो, आई टेल यू कि हमारी बॉडी को वेरियस विटामिन और मिनरल्स लगते हैं. विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के,
बी कॉम्प्लेक्स, उसमें रेंज है B1 B2 B3 B5 B7 B9 B12, इट्स अ रेंज। मिनरल्स में जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, सेलेनियम, कॉपर, ये सारे अलग अलग मिनरल हैं। इन सब का हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ काम है। अभी हम जब पढ़ाई कर रहे थे इन द मेडिसिन, तो इट टुक अस 1 year टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट ऑल दीज केमिकल्स। तो इट्स practically impossible for me to teach you everything about those things in next 15 minutes, है ना। बट एक हिंदी में कहावत है ना, आम खाते हैं गुठलियां क्यों गिननी है हमें। So we will do exactly that. We will just enjoy our mangoes and forget about the gutliyan. Let's do it. How to do it? Okay. So we'll take a couple of examples of vitamins and minerals and why they are important. The important ones. So, for example, vitamin C. Vitamin C को ascorbic acid भी बुलाते हैं. Vitamin C हमारी बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति, which is the immunity, उसके लिए essential है. I will keep on emphasizing on the word essential and vital because essential and vital को आप emphasize नहीं करोगे तो you will keep on taking it lightly. A lot of people suffered COVID infection because their immunity was weak, and vitamin C is necessary on a daily basis. So if you are someone who get cold and cough every now and then, if you suffered pandemic multiple times, if you suffered from COVID multiple times, could be your immunity is compromised, उसके लिए vitamin C चाहिए. Vitamin D is good for your bone health, but it's also important for your immunity. It's also important for your mental health. विटामिन डी की कमी की वजह से आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आ सकते हैं. सो सैड फील करना, मूड स्विंग्स होना, इट कुड बी बिकॉज ऑफ विटामिन डी. एंड गाइस, यू वोंट बिलीव, इंडिया में मैं जब से वापस आया हूं, मैंने जितने भी क्लाइंट्स देखे हैं, सो बिफोर साइनिंग अप अ क्लाइंट आई मेक देयर ब्लड रिपोर्ट डन. तो जब मैं उनका ब्लड रिपोर्ट कराता हूं, 90% से ज्यादा clients, 90%, it's a huge number. In last 3 or 4 years, I have seen more than 10,000 clients. 90% से ज्यादा क्लाइंट का विटामिन डी कम आया है जरूरत से. अभी मुझे बताओ कि विटामिन डी हमें कहां से मिलता है. एंड इस सवाल का जवाब सोचते सोचते आपकी मुंडी है ना ऐसे ऊपर जाएगी, लुकिंग एट द सन. हालांकि सन अभी अवेलेबल भी नहीं है, नाइट है ना. दिस इज व्हाट वी हैव बीन. तो डू यू थिंक इंडिया में सनलाइट की कमी है? दिस इज डू यू थिंक इंडिया में सनलाइट की कमी है? नो. इंडिया हैज अच्छा खासा सनलाइट. तो even if we have enough sunlight, then why are we suffering from vitamin D? तो वाई पे पहुंचने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. ओके, विटामिन सी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी, विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन हेल्थ, टीथ हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड immunity as well. If I was to talk about certain, let's say chemical, the minerals, the calcium is what? Calcium हमारी bone के लिए अच्छा होता है. We have all heard about calcium is good for our bones, right? Why? Let's say if this cup was my bone, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो इट इज मेड फ्रॉम कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. रॉ मटेरियल है आपके बोन्स का. तो इफ यू आर नॉट ईटिंग कैल्शियम रिच फूड आइटम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपका बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ इज गोइंग टू स्ट्रगल. इफ यू आर ईटिंग कैल्शियम, you have heard now vitamin D is good for our bone health. Why? Because whatever calcium rich food item, let's say आप dairy regularly खा रहे हो, कर्ड खा रहे हो, मिल्क पी रहे हो, उसमें से आपको कैल्शियम मिल रहा है. But if your vitamin D levels are not good, that calcium is not going to get stored. आपको वापस से बोन हेल्थ का इश्यू हो सकता है, जॉइंट हेल्थ का इश्यू हो सकता है. Sodium and potassium, they are important for your brain signals to reach to your body parts. तो हमारा ब्रेन हमें दो तरीके से कंट्रोल करता है. एक है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू. तो ब्रेन में से बहुत सारी नर्व्स निकलती है, दे रीच आउट टू आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. सो फॉर एग्जांपल, मैं अभी बात कर रहा हूं और हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूं, उसके जो सिग्नल्स है मेरे ब्रेन में से निकल रहे हैं, राइट. वो सिग्नल्स को सही तरीके से रेगुलेट करने का काम है सोडियम और पोटेशियम का. तो इफ यू आर नॉट एडिंग सोडियम एंड पोटेशियम एवरी डे ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी मूवमेंट, आपके एनर्जी लेवल सब स्ट्रगल हो सकता है. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस के विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नॉट ऐसे ही जिसको आप लाइटली ले सकते हो, ये वाई समझना बहुत जरूरी था. अभी वाई समझ गए तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं. तो आप बोलोगे कि उमेश,
हाउ डू वी गो अबाउट इट, हमें क्या करना चाहिए हमारे विटामिन और मिनरल लेवल को सही रखने के लिए। तो पहले हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, फिर बात करेंगे डेफिशिएंसीज के बारे में, ठीक है। अगर मैनेजमेंट की बात आती है ना, तो एज आई सेड, आम खाते हैं गुठलियां क्यों गिननी है। अगर आप एक बैलेंस डाइट खा रहे हो फ्रॉम वेराइटी ऑफ फूड सोर्सेस, और मैं स्पेसिफिकली 6 ग्रुप्स बता रहा हूं आपको, अगर आपकी डाइट में रेगुलरली ये 6 ग्रुप्स अवेलेबल हैं, तो आपका विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी नहीं आएगा। रेगुलरली आना बहुत जरूरी है ये 6 ग्रुप्स का। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मैं तो डेयरी खाती हूँ या मैं तो नट्स खाती हूँ, बट मैंने आपकी डाइट चेक की तो आप 2 हफ्ते में एक बार नट्स खा रहे हो। नहीं, ये जो भी 6 ग्रुप्स मैं आपको बता रहा हूं रेगुलरली आपके डाइट में होने चाहिए। एंड दो 6 ग्रुप्स आर, फर्स्ट, सीजनल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपके डाइट में सीजनल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। टू, लेग्यूम्स, चना, छोले, राजमा, ये जितने भी लेग्यूम जिनको गुजराती में कठोर बुलाते हैं, यू नीड रेगुलर इनटेक ऑफ लेग्यूम्स। थर्ड, मिलेट्स, जवार, बाजरा, रागी, रेगुलरली आपके रूटीन में होना चाहिए। फोर, नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, ब्राजील नट्स, पिस्ताचियो, कैशू नट्स, रेगुलरली जाना चाहिए। जब याद रहा तब नहीं, रेगुलरली। सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स, रेगुलरली जाना चाहिए। एंड लास्ट इज डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है कर्ड, बटर मिल्क, मिल्क, चीज, पनीर, बटर, ये सारा, इट्स अ रेंज। तो ये 6 ग्रुप्स अगर आप रेगुलरली आपकी डाइट में ऐड करना शुरू कर दोगे तो आपको डेफिशिएंसी नहीं आएगा। बट अगर व्हाट इफ आपको ऑलरेडी डेफिशिएंसी है, व्हाट टू डू अबाउट दैट? The only scientific way to go about it is get your blood reports done. अगर आप 20 का एज क्रॉस कर चुके हो तो वंस अ ईयर यू शुड गेट योर फुल बॉडी चेकअप डन, जहां पे आपके विटामिन और मिनरल प्रोफाइल चेक होनी चाहिए। वन, अगर आप 30+ कर चुके हो तो आपको एवरी 6 मंथ्स ब्लड चेक कराना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, हम सबके पास गाड़ी है, जिन जिन के पास गाड़ी है मुझे बताओ तो, लाइक हु ऑल आर पीपल हु ऑल आर ड्राइविंग, लाइक जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कुछ भी चलेगा, ओके। ओके, इफ यू ड्राइव अ कार, इफ यू ओन अ कार और अ बाइक, देखो, गाड़ी में कुछ बिगड़ा हुआ नहीं भी है ना, तो भी एवरी 6 मंथ्स और 8 मंथ्स और आफ्टर एवरी फ्यू थाउजेंड किलोमीटर्स हम गाड़ी को सर्विस कराने लेके जाते हैं। यू नो व्हाई? गाड़ी में कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, सर्विस कराने लेके जाते हैं। व्हाई? टू फाइंड आउट कि गाड़ी में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो हम उसको वहीं पे फिक्स कर दें। एंड टू, जो डेली मेंटेनेंस होता है उसका सर्विसिंग हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी तो चल रही है, वाई आर वी टेकिंग इट टू द सर्विस स्टेशन? बिकॉज कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन ना है। ब्लड रिपोर्ट एनालिसिस इज जस्ट दैट। अगर आप रेगुलरली ब्लड चेक कराते रहोगे तो अगर कोई बड़ी बीमारी जो एसिम्टमिक होती है, जिनका सिम्टम्स अभी आ ही नहीं रहा है, वो आपकी डिटेक्ट हो सकती है रेगुलर हेल्थ चेकअप से। सो रेगुलर हेल्थ चेकअप कराओ, देखो आपको कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स की कमी है, उसको इमीडिएटली फिक्स करने के लिए यू माइट हैव टू टेक टैबलेट और सप्लीमेंटेशन। इमीडिएटली फिक्स करने के लिए टेम्पररी। फॉर एग्जाम्पल, आपका विटामिन डी का लेवल होना चाहिए 30 से ऊपर, बट अभी 9 से नीचे जा रहा है, आपके एनर्जी लेवल स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका मेंटल मूड मूड स्विंग्स एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, है ना? तो डाइट में से उसको फिक्स करते थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इट्स ओके टू स्टार्ट विद सप्लीमेंटेशन फॉर 4 to 6 वीक्स, बट जैसे ही आपका लेवल ऊपर आ गया, देन स्टॉप सप्लीमेंटेशन एंड स्टार्ट फिक्सिंग इट यूजिंग योर डाइट। Supplements are not bad, supplements are just supplements, but supplements पे we have a separate chapter. Today I'm talking about micronutrients. Micronutrients में आता है vitamins और minerals, उन सबका importance है, they are vital, they are essential. We need to eat this 6 groups of food on a daily basis. कौन कौन से थे? Legumes, fresh fruits and vegetables, nuts, seeds, मिलेट्स एंड लास्टली डेयरी प्रोडक्ट्स। ये सब ऐड करोगे, रेगुलरली ऐड करोगे, तो आपका विटामिन और मिनरल मेंटेनेंस अच्छे से चलेगा। इतना ओवरलोड या ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि लेट्स से बी ट्वेल्व कम है तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा।
नॉट नेसेसरीली। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स रेगुलरली खा रहे हो तो B12 आपके लिए आपको नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं है। There are so many options available. Problem arises when we don't have those things on a regular basis. ठीक है, तो this was a tiny bit about micronutrients. आपको डेफिशिएंसी फिक्स करने के लिए क्या करना है, ब्लड रिपोर्ट करना है, एग्जैक्टली चेक करना है कि आपकी बॉडी में कौन से विटामिन और मिनरल्स की कमी है. डू नॉट जस्ट बाय मल्टीविटामिन विदाउट चेकिंग योर ब्लड रिपोर्ट्स. इट्स एन अलर्ट. थिंक अबाउट इट. कुछ प्रकार के विटामिन होते हैं जो आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं, जैसे कि विटामिन डी. सो विटामिन डी टॉक्सिसिटी इज अ वेरी कॉमन क्लिनिकल कंडीशन, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मेरा विटामिन डी कम है तो मैं जाके फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में से विटामिन डी की गोलियां ले लूंगी और रेगुलरली खाऊंगी. रेगुलरली खाओगे तो होगा क्या, आपको चाहिए था 30, अब आप रेगुलरली खा रहे हो वो 50, 70, 90. अगर वो ऊपर चला गया जरूरत से तो इट कैन क्रिएट टॉक्सिसिटी एंड इट कैन क्रिएट एग्जैक्टली ऑपोजिट सिम्टम्स जो आपको विटामिन डी हेल्प करता है उसमें. So never ever take multivitamin pills without getting your blood report done and without getting your lifestyle analyzed from a qualified nutritionist and a doctor. आप अपनी हेल्थ के साथ छेड़खानी मत करो. एक बार करने की बात है ये, एक बार. once you figure that out you don't have to do it regularly. ठीक है, so this is what about micronutrients. Let's go through some questions. Let's go through it. Yamini, Let are you us, there? Yeah. yes, I am here. Huh. So I would want you to curate the questions for me, please. Of course. So let's quickly repeat the six sources of vitamins and minerals, which are our Mm-hmm. micronutrients. Mm-hmm. They are fresh fruits and vegetables, seasonal fruits. Seasonal fresh fruits and vegetables, Yeah. Then legumes. if you can get it organic, that would be amazing. Yes, Next is legumes. legumes Legumes, is chana, chole, bless excuse me, you. rajma, paneer. Sorry, rajma, and then dairy products. जो हम Then your जानते हैं nuts दही, and seeds nuts, seeds and and millets. millets. Millets को ठीक है, मोटा अनाज भी कहते हैं या बड़ा हाँ अनाज भी मोटा अनाज, कहते हैं. ज्वार, या सो बाजरा, रागी. ठीक है. Okay. फांगनी. Now there is one very frequent question. Can I address that? Sure, sure. Yeah. So a lot of vegans they get confused about the dairy products. Okay. So if you are a vegan and if you are confused whether you want to dairy products नहीं खा सकते तो हम क्या कर सकते हैं? One, if you are a vegan, then you must know dairy alternatives. So there are so many brands who are making soy milk, almond milk, oat milk, or you can make this at home as well. But making it at home में थोड़ा difficulty ये होगा कि जो so for example B12 है या विटामिन डी है, तो बाहर से जो बने हुए हैं उसमें फोर्टिफिकेशन होता है. सो फॉर एग्जांपल आलमंड मिल्क अ पैक्ड वन, दे वुड हैव एडेड विटामिन B12 and D to it for people who are going through a vegan diet. Okay, so it's absolutely okay for you to consume fortified cereals, fortified dairy products, oh sorry, dairy alternatives if you are a vegan, but there are plenty of options available. Also, soy products are very rich in the vitamins and minerals that we spoke about. So biotin and B12 अच्छा खासा आपको सोया प्रोडक्ट्स में से भी मिल सकता है. Amazing. Another question that is coming up a lot is legumes खाने से गैस की प्रॉब्लम होती है. What else can we do for this? ओके, मुझे बताओ किस किस को गैस की प्रॉब्लम होती है. टाइप गैस. लेट्स मेक द चैट गैसी. ओके, सो whenever there is a gas का problem ना, you have to see in two ways. कि एक प्रकार का गैस है कि जो मुझे सिर्फ लेग्यूम्स खाने के बाद हो रहा है, एंड दूसरा आई हैव अ कांस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ गैस. ठीक है, Got it. सो इफ यू हैव अ रेगुलर प्रॉब्लम ऑफ गैस एंड ब्लोटिंग, then you need to get your gut health checked. It could be because of some other reason. One, Agreed. gut health पे हमारा एक separate chapter है. We'll talk about gut health in detail. But अगर if it is happening because of the legumes, trust me, it's absolutely normal. I'll tell you why. Legumes have a special kind of sugar. उसको बोलते हैं FODMAPS, FODMAPs. उसका full form है, it's an abbreviation. Fermented oligo
whatever. It's a long, you don't have to remember. It's a special kind of sugar जो आपके small intestine में digest नहीं होता है. It goes into your large intestine and it gets digested by a bacterial group. और उसके बाय प्रोडक्ट में naturally your body produces gas. Got It's it. very natural for you to feel gassy. But trust me, अगर for example आज रात को मैंने छोले खाया, तो थोड़ा रूम का माहौल हम खराब करेंगे और रात को थोड़ा हमें टेंशन होगा कि यार थोड़ा ब्लोट फील हुआ है. But next morning you are okay. It's not going to continue forever. It's very natural. There are ways to reduce that gas effect. One of that thing is extended soaking. So जब आप सोक कर रहे हो तो 24 hours के लिए सोक करो एंड 3 बार उसका पानी चेंज करो if possible. So 8 घंटे पे change the water and then cook. And while you are soaking it, add some turmeric powder to it. तो ये दो टिप्स है ना आपके लिए हेल्प कर सकती है उसका गैसी इफेक्ट कम करने के लिए. बट गैसी इफेक्ट पूरा कभी भी नहीं जाएगा. इट्स देयर नेचर. Amazing. Let's quickly repeat this in English. So, if you feel that certain legumes cause gassiness in your body or cause bloating, one method that you can try is soaking it. You can soak it for approximately 24 hours and change that water every 8 hours if possible. And while you're changing water, also add a little bit of turmeric. That might help. Turmeric in Hindi is haldi. So, usko aap Yeah. add कीजिए. So, hopefully that will help with gas. And let us Yes. know when you try it tomorrow. How did you Yes, feel? please. Yes. Yeah, no, Next but today next you will three four soak it. days try हाँ, that out. हाँ, yeah, and Next you three you four days might में be try yeah, absolutely. The next question is, oh, another interesting thing when you talked about blood work every year is we at Habit always promote that every year you should gift yourself a blood work on your birthday. लवली. हैबिट Yeah, की टीम के लिए जादू की जप्पी. तो तो हम लोग सबको बोलते हैं कि आप हर अपने बर्थडे पे, क्योंकि बर्थडे तो कोई नहीं भूलेगा, तो उस दिन जाके आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए. हाँ जी. हाँ जी. Yes. Yeah. All right. Looking for more questions. A lot of Can people are we asking questions around uric acid. Please visit the yesterday ka video if possible because we have talked about uric acid in length. will changing water not drain nutrients? That is one. The No, no, second no, is it won't. It won't. can we drink soaked water from walnuts or almonds or any other nuts? Soaked water, like the water that we are soaking it in. Yeah, let's say I'm soaking almonds overnight. So in हाँ, the हाँ. morning, I generally discard that water. So somebody's asking if they should have that soaked water in which. I haven't read any nutritional benefits of it because I feel a lot of people soak nuts. उनको ऐसा लगता है कि उनके जो toxins हैं वो निकल जाएंगे. So if you are soaking it from that perspective, then why are you drinking the toxin rich? But no, it doesn't have any nutritional value. To be really Right. honest. And रही बात legumes को soak करके उसमें no, it doesn't because the only soaking problem or losing the nutrient problem will happen with fresh fruits and vegetables. So let's say if you are cooking fresh vegetables and when you are heating it, the vitamins present in there, they are heat sensitive, so you can perhaps lose thoda sa nutrient there. And if you are boiling the vegetables, तो again water soluble vitamins होते हैं उसके अंदर, तो don't throw away that water, make a soup out of it and drink it. Which is why it's advisable that anytime you boil any vegetable, you should keep that water as a vegetable broth if you're not Broth, using it yeah, right then. Yeah, yes. and just use it next time, whatever you're preparing, हाँ. right? It's हाँ जी, perfect हाँ जी. way to have them. Yes, another important question is about seeds. Do we Hmm. roast them? Do we soak them? What should we do with them? Or do we just have them? See, I would suggest go with the taste. Okay. So, for example, chia seeds, they are really good. They make your water cool. Okay. So, what I do is I put it in a liter water bottle, add a spoonful of chia seeds. तो वो होता है, right? So you can do that. You can add that in smoothie. If you are making a salad, and if you want a crunch on top of it, you can add that. Flax seeds, उसको रॉ खाएंगे तो they don't taste well. So if you can roast it in some lemon and salt, they become crunchy and you can use it as a mukhwas. ठीक है? So Okay. these are the different ways you can use it. There is no standardized way as such. All right. Hmm. So, jaldi se chia. Okay, we've taken this.
Alternative of seeds for somebody who's allergic to seeds. What about nut allergy? Okay, so nuts and seeds, they both are rich sources of fats and थोड़ा सा प्रोटीन एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, तो हमने कल या परसों के टॉपिक में बात किया था कि एलर्जी को वी यूज इट वेरी लूजली. इफ यू हैव गॉटन अ ब्लड रिपोर्ट जहां पे जो एलर्जी, फूड एलर्जी रिपोर्ट्स जो है, टेस्ट होते हैं, वो आपने कराया है और उसमें आपको बोला गया है कि नट्स एंड सीड्स का एलर्जी है, बट आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो don't listen to those reports because allergy tests are not accurate. We haven't figured out the science as yet. So don't worry about it. You eat nuts as long as you're not getting the allergy ka symptoms. Just don't go by those reports blindly. ठीक है. And there are, as I said, there are so many different varieties available. So I've given you 6 groups now. So have a variety of food sources in your regular diet and you should be fine. Amazing. So we can Hmm. all like take Hmm. sauces which are suitable to us. If you feel that certain sauce is not suitable, Hmm. then you always have an alternative to increase the quantity of some other sauce to balance it out. We Hmm. already spoke about well balanced diet in the first session. So people are asking for a list of blood reports Yeah. and si- so What I have tests to made a be done? note of it. I have made a note of this. See, when it comes to blood reports now, the personalized recommendation will be dependent upon a lot of different factors, but सिर्फ जो बेसिक होते हैं जो हर ह्यूमन बीइंग को कराने चाहिए, उसका मैं एक लिस्ट आपको भेज सकता हूँ यामिनी, which can be shared if possible, and I'll Of also course. make a list of the 6 steps as well in that same PDF, which can people can use. Amazing. Let's do that. So we will share that with you in some time after Hmm. the session, maybe tonight or tomorrow morning. One Hmm. interesting question is the difference between legumes and split dals like moong dal, chana dal, tur dal versus chana, rajma. Hmm. ओके, द डिफरेंस इज जस्ट दैट कि एक लेग्यूम है और दूसरा दाल है. तो इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है? लेग्यूम्स है थोड़ा सा हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन कंपैरिजन टू लेंटिल्स. Right. लेंटिल्स है मोर कार्ब्स इन कंपैरिजन टू लेग्यूम्स, एंड थोड़ा थोड़ा विटामिन एंड मिनरल्स का प्रोफाइल डिफर करेगा. बट मैं शुरुआत में जैसे बोल रहा था कि विल फोकस ऑन ईटिंग मैंगो ना. हमें क्यों उसके बायोकेमिस्ट्री में जाना है? बिकॉज knowing that is not that important micro level pe. What we need is the consistency and adding them in our routine on a regular basis. Because I Can have we noticed, yeah, many like हमारे हमारे घर में, like for example, I again I come from a Sindhi household, तो हमारे घर में मूंग बनता है बुधवार को, so Wednesday is fixed for मूंग, okay. and शुक्रवार को बनेगा चना, and these are the only 2 days we have legumes. Oh, Yeah. So, how are we expecting to get all the benefits of legumes if I am only eating it twice a week? I have to. Then again, people. So paneer is again a luxury. We only eat paneer when we are going eat out with a Punjabi restaurant or something. Most Indian households. I don't know if other people can relate. Can you relate to this? Do you eat like paneer is घर पे बहुत कम बनता है. When you go out, फैमिली के साथ तो पनीर टिक्का या ऐसा कुछ आएगा, एंड लेग्यूम्स का दिन फिक्स होता है. सी okay. थर्सडे को चना बनता है. सो पीपल, सो दिस इज व्हाट द कॉमन प्रैक्टिस इज. Agreed. So, but now that we know that we have to incorporate these, of course, whatever your religious and cultural practices do advise you to, we should follow that. But additionally, on other days, we should also incorporate other food groups which we know are essential for our body. Yes, yes, yes. And a lot of people will say कि यार रोज रोज पनीर हम कैसे खाएंगे या रोज चना कैसे खाएंगे. My only answer to all of you is रोज रोज रोटी. दवाई कैसे खाएंगे? नहीं 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 नहीं, मैं तो वो गिल्ट ट्रिप में जाने भी नहीं देना चाहता अभी. थोड़ा क्यूट, थोड़ा क्यूट. हम सबका बरसों से ब्रेकफास्ट इज ऑलमोस्ट पोहा, उपमा, इडली, डोसा, वड़ा, पराठा. लंच एंड डिनर इज दाल चावल सब्जी रोटी. अगर आप उससे बोर नहीं हुए हो तो
पनीर, चना, छोले, राजमा, दही, ये जितने भी मैंने ऑप्शंस दिए उससे भी नहीं हो गए. इट्स जस्ट अबाउट चेंजिंग दैट हैबिट. इट्स चेंजिंग द हैबिट. ओके. Very nice. That's a wonderful take. Looking for some interesting questions. If you find something, Dr. Umesh, please go ahead. Yeah, sure. uh, I, what about sprouts? Shobhaji, sprouts are amazing, Baba. Sprouts are really good source of vitamins, minerals, good fiber, and good protein. Venkata ji is asking how many times should we eat? We talked about it on the first day. I'll repeat. We should follow the practice of mindful eating. Our body communicates with us in two different ways. One is hunger and second is thirst. Deepa ji, I will address your question. Yeah, just a second. Hunger and thirst. So it differs from person to person. So मुझे दिन में 4 बार भूख लग सकती है, यामिनी को 2 बार लग सकती है और आपको 3 बार लग सकती है. It doesn't matter how many times you are eating. It matters what you are eating and how much you are eating. If you are eating a balanced diet in the right quantity, trust me, your hunger pangs and hunger cravings and everything will set to a system. I can't, there is no specific number कि आपको 2 ही मील खाने चाहिए, 3 मील खाने चाहिए. It should work for you, and that's where the personalized nutrition comes in place. I found a very interesting question, which is also a question for me. What about what time of the day should we focus on legumes? Okay. What time of the day should we have legumes? It entirely depends कि आपको कब गैस से डील करना है. All right, okay. Because there is, trust me, there is no specific timing. The only timing rule मैं आपको बताता हूँ, the only timing rule that you should focus on is same 3-4 hour rule that we spoke about caffeine and chai yesterday. आप सुबह सुबह उठे हो तो try avoiding eating anything for the first 3-4 hours, because your body is waking up. It is ready to wake up in full energy. Your body is designed in that way कि भाई साहब उठे हैं, आपको full on हम prep करेंगे पूरे दिन से लड़ने के लिए. तो your body is setting up all the hormones to do the same. तो it's the conditioning that we have gotten into कि we have to eat as soon as we wake up, or we have to have a chai or a coffee as soon as you don't. The only thing you need is water to flush your digestive system. That's about it. So if you can get into that habit and try avoid eating anything 4 hours before you go to bed, because अगर आप immediately सोने से पहले कुछ खा रहे हो तो your body will get busier in digesting that part and your sleep quality will struggle. It's not that food is not going to digest. Your body is going to prioritize that only. If you are eating something, your body is like, okay, first चलो इसको digest करते हैं. It will affect your sleep quality and that can have negative impact. Amazing, amazing. Are millets easily digestible? Can I replace millets with grains forever? You can. India is a nation of millets. Until the green revolution that happened, उससे पहले हम तो millets ही खा रहे थे ना. So it's absolutely okay. अगर आपको digestion में दिक्कत हो रही है तो get your gut health checked. It could be because Also, of gut health. Don't try not blaming anything on a specific food group. It could be something internal. also soaking millets help a lot for those of us who हाँ, have issues with हाँ, millets. हाँ. Soaking millets is wonderful. I'll address Deepa ka question. She has been typing food to avoid for people who have यार वो सवाल बहुत जल्दी जल्दी ऊपर चला जाता है. I Deepa, can you know. please copy paste again? Deepa ji, we are very sorry, Deepa ji, please. please. I missed out. We'll take 2 more questions, then I have to shoot off. Yeah. All Uh, right. Let's pick up two. Okay, so we have also would also want to take your take on microgreens. So at Habit, we okay. ran a microgreens session where we taught our members how to grow microgreens. Would you like to Okay. comment on how microgreens helps our well balanced diet? See, microgreens are, again, this is the lesson that I gave you on the first day as well. कि start looking at food item for what it is. ठीक है. One isolated food group cannot help you with bettering your health or harming your health.
तो माइक्रोग्रीन्स क्या है? दे आर अगेन रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर. Right. ठीक है. तो either you get it from your regular produce, that the fruits and vegetables, or get it from it's excellent. But अगर आप वो नहीं ले पा रहे, doesn't mean you don't have an other option. It's a substitute, like an सब. alternative for some other sauce. हाँ, Yeah. हाँ. All right. All right, last Foods to question for the avoid. day. Foods to avoid. Deepaji's question we are taking, which हाँ. got foods to Foods to avoid avoid. for those who have hypothyroidism. Went up again. Is soya bad for people having hypothyroidism? Okay, amazing. How many of you want to know the answer of this question? जल्दी से yes yes type करो chat में. मैं आपको बताता हूँ कि soy product का क्या impact है on thyroid and what about thyroid. Thyroid पे अगर अलग से chapter है, by the way, in the 4th week or 3rd week we have a separate chapter on thyroid. Thyroid का जो problem है, it is a hormonal imbalance. The rumor or the talks on the internet about soy products or cruciferous vegetables, बोलते हैं कि पालक भी मत खाओ, गोभी भी मत खाओ, ब्रोकली भी मत खाओ, कैबेज मत खाओ. There were a few studies back in the 80s which supported the fact कि ये थायराइड हार्मोन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है. ठीक है. It doesn't impact the thyroid gland. जो the tablet that you are taking, उसके absorption को वो impact करता है. But the studies were not that big enough for them to be very credible. तो वो client to client differ करता है. So what we do is, as nutritionists, we don't say कि भाई आपको thyroid है तो you should have to stop eating soya chunks or soya products. What we do is we try them out. So if a client comes to me, we will start thinking कि soya products से इनको कोई problem नहीं है, because their body is not reacting in a negative way. So we start with the soya. Then every 6 weeks हम उनके blood reports कराते हैं. तो अगर उनके blood reports में ऐसा चीज आ रहा है कि उनका thyroid absorption सही नहीं चल रहा है, तो we will discontinue soya products for them. But soya products are not the culprit for everyone. It's not a universal thing. We are still figuring out. So I am okay saying we don't know. As a scientific fraternity, we don't know whether soya products are bad for thyroid or not. It's not a universal thing. Rahi baat what to avoid? Nothing. When I say nothing, nothing from the balanced diet ka group. Hormonal imbalance, junk food, trans fats और refined sugar से होता है. तो इफ यू कैन मिनिमाइज दैट एज मच एज पॉसिबल, अमेजिंग. बट बैलेंस फूड का जो ग्रुप है उसमें से कुछ अवॉइड करने की जरूरत नहीं है. नॉट इवन डेयरी if you have thyroid. A lot of nutritionists will tell you dairy बंद कर दो if you have thyroid, या ये, but it doesn't work that way. All right. Thank you so much, Dr. Umesh, for taking time out today and blessing us with the knowledge of micronutrients. What are we going to learn about tomorrow? We are going to learn about fiber tomorrow. Amazing. ठीक है. So, सो फाइबर के बारे में हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे. अपने सारे सवाल रेडी रखना. बट कल के लिए एक्शनेबल प्लान ये है कि यू हैव टू ईट. ये जो मैं 6 ग्रुप बोले हैं ना, उनमें से एक एक चीज जानी चाहिए आपकी डाइट में. सो एक पोर्शन ऑफ फ्रूट, ब्रेकफास्ट और लंच में लेग्यूम होना चाहिए. लंच या डिनर के बाद एक कटोरी दही या कुछ होना चाहिए. एक पोर्शन ऑफ नट्स आप खाओगे. एक पोर्शन ऑफ सीड्स, आप चिया सीड पानी के बोतल में डाल के पियोगे. एंड रोटी जो बना रहे हो वो मिलेट की बनाओगे. ये 6 चीजें आपने करनी है. दिस इज वेरी एक्शनेबल. और जो अचीव कर लेगा उन लोगों को मैं क्या दूंगा, मैं शाबाशी दूंगा और आपके लिए एक शायरी बोलूंगा. ठीक है. दैट्स माय प्रॉमिस टू wow. ऑल. सो Looking यू हैव forward टू. to it. Sorry, please continue. नहीं नहीं नहीं, पोर्शन चारों जी मैंने बोला ना, पोर्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द लास्ट वीक. अभी के लिए जस्ट इंक्लूड. ठीक है. Awesome. Thank you so much, Yamini, again for having me. Thank you so much, everyone, for joining in today as well. I'll see you all tomorrow for the fiber session. Amazing. Thank you so much, everybody. Thank you so much, Dr. Umesh. Let's quickly take down the actionables. Today, we learned about micronutrients. We have learned the 6 sources. Kal, we have to have those micronutrients in our diet. Dr. Umesh is going to ask us. We all have to say, yes, we've had it. हम वो खा के आए हैं. Please write आपने क्या खाया. तो आज ही सोच लीजिए कि मुझे कब क्या खाना है. When do I want to eat what?
It's already 9 9. We want you to sleep early. So take care. Thank you so much. And we will send you everything you need. Bye bye. Good night.